Good afternoon. Today we are going to solve February March 2023 paper hai 1 2 and this is A level biology. Okay, so let's move to the first question. The photomicrograph shows cells from a human blood smear, and which calculation shows correct method to calculate the actual diameter. This is important. We have to find the actual diameter of the neutrophil shown in the photomicrograph in micrometers. So we have to find the answer in micrometers. Now to find the actual length, we have to find the length of from P to Q. Okay. Some students find it difficult to actually recognize the formula for finding magnification, actual length, and the image length. So there is this technique where we have this triangle and we have this magnification, we have I image length here, and we have the actual length here. So now it says that we have to find the actual diameter, which means this. So for this we have to divide the image length by the magnification. Okay, so we have the formula actual length is equals to image upon magnification. Now to find the actual length we need the image length as well. So to find the image length we have to find the length from P to Q. Let PQ be 2 centimeter. If you see all the options right here, I have to find the length in millimeters first. Millimeters, 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 millimeters. Okay. If we see the C and D options are wrong because we have the formula image upon magnification, which means magnification should be at the bottom in the denominator, which means A and B are correct, right? We cancel out, we reject C and D. Now from A and B, for example, we have this 2 centimeter, right? 2 centimeter we have to convert into millimeters, which is 20 millimeters. For 20 millimeters we have to convert it into micrometers, right? 20 micrometers multiplied by 1000. From millimeters to micrometers we have to multiply by 1000, and then we divide it by what does the formula say? Magnification, right? Magnification of the photomicrograph. This is the formula we have. So what's the formula from A and from B? We have A. What do we have? A. Why? Because it's multiplying by 1000, not by 10,000. 10,000 is nanometers, which is very like a small value. So A is the correct answer. If we go to question number 2, the question is a student calibrated an eyepiece graticule using a stage micrometer. Each division is 0.01. Now if some students know that this is, for example, this is a stage micrometer, the values which are very far away, this is the stage micrometer. What's this? The stage micrometer. And the values which are very close to each other, like this, this is the eyepiece. Okay, this is the eyepiece graticule is basically the arbitrary unit. It tells us the arbitrary units, right? So if we see which take 10 magnification objective lens, 10 eyepiece graticule units match 10 divisions of the stage micrometer, right? The same microscope was used of 40. Oh, it's comparing with the 10 magnification and the 40 magnification. So to measure the diameter of an alveolus, the diameter was found to be 96 eyepiece graticules. What is the best estimate for the diameter of the alveolus, right? So it's telling us the 96 eyepiece graticules, and we have the division as 0.01 millimeters. So we straightforward multiply 96, the eyepiece graticule units, multiply with the stage micrometer units, 0.01 millimeters. Okay, millimeters. Okay, so we have the answer as 0.96 millimeters, but no, the answers should be in the micrometers as a standard value, but there are some values in millimeters as well, so let's keep it in millimeters as well and micrometers as well. So for example, this is the millimeter, and to convert it into micrometers we multiply by 1000, which is 960 micrometers. Okay, so if it's saying that 960 micrometers are for the 40 magnification. Okay, 960 micrometers is for
40 magnification. We have to find it for the 10x magnification. 10x magnification, and this is we do the cross multiply. We cross multiply this thing, and 40x is equals to 9600. Let me solve it. X is equals to, wait one second, x is equals to 90, wait one second, 9600 divided by 40, 9600 divided by 40, the answer comes out to be 240 micrometers. Yeah, C is the answer, right? Question number 3. Which statements are correct for chloroplasts and also for mitochondria? So if we know the chloroplast and mitochondria, they have the 70s ribosomes. They do not have the 80s ribosomes, these are the eukaryotes. Oh, sorry, these are the prokaryotes. Eukaryotes are the one which have 80s ribosomes. They contain 80s ribosomes. Absolutely wrong. They can transcribe their circular DNA. Yup, this is possible because the mitochondria and the chloroplasts have circular DNA, which is loosely packed, right? They can translate mRNA, absolutely, because they have the ribosomes, right? They are enclosed by double membranes. Yes, they have the cell membrane. Yeah, okay. So 1 is wrong, 2, 3, and 4. Where is the 2 and 3 and 4? Oh, yep. C is the answer. Question number 4. The electron micrograph shows some cells from a root. Which cell structure is not usually found from a root? Not usually found from a root. Okay. So if we see, yep, A. This A thingy is the nucleolus. This D, surrounded by the nucleolus, is the nuclear envelope. This where did it go? Wait, this B thingy is the, what's B? B is a chloroplast, right? And this C, this thingy, is the what's this? Cell membrane, right? Cell membrane. Not usually found from a root, so nucleolus is present in a root, nuclear envelope is also present in a root, cell membrane is also present in a root, chloroplast is not present in a root, so B is the answer. Yup, B is the answer. 5. Dialysis whisking tube is an artificial partially permeable membrane with pore sizes of approximately 2.5 nanometer. Glucose molecules have a diameter of about 1.5 nanometers and can pass through the pores in the membrane. What else can pass through the pores? Okay, so if we see, the glucose molecules have this and the pore size. Okay, so this is the pore sizes. Okay, now this size is 2.5 nanometers, and it says that glucose molecules can pass through. For example, glucose molecules can pass through because they have a size smaller than the pores, 1.5 nanometers, right? Bacteria, if we see, glucose molecules make the fructose molecules are basically the monosaccharides. The fructose molecules are basically the monosaccharides. They can actually not pass. Wait one second. So basically, if we see, bacteria is very long, like bacteria is very thick to not pass through from these pores. So this is wrong. Bacteria cannot not pass through the pores. Hemoglobin is, also cannot. Ribosomes also cannot. And fructose is a monosaccharide, which means glucose is also monosaccharide. So they can pass through. From this question, from this knowledge of this whole question, so 4 is the answer, which means D is the answer, right? What is present in all viruses? Right? So if we see, if we have the knowledge that, for example, this is a DNA, this is a RNA molecule.
DNA has A adenine, T thymine, G guanine, and C cytosine. But RNA has all of them: adenine, guanine, cytosine, but T instead of thymine it has uracil. Okay, so what is present in all viruses? Ribose is present in the RNA. In RNA, if we know that from in the viruses, RNA. In the viruses, the nucleic acids is basically RNA or DNA. We do not know that. Okay, so ribose is present in the RNA. Deoxyribose is in the DNA. Adenine is present in both of them. Adenine is present in both of them. Thymine is only present in DNA. So C is the answer. Okay, let's stop this messy work. The adenine is present in DNA as well, and adenine is present in RNA as well. It asks for what is present in all the viruses. So C is the answer, which means adenine is present in all the viruses, right? To estimate the concentration of glucose in an unknown solution, equal volumes of a range of known concentrations of glucose were each mixed with the same excess volume of Benedict solution. After mixing, the solutions were placed in a thermostatically controlled water bath at 90 degrees centigrade for 3 minutes. The unknown solution was then treated in the same way and the colors of the known unknown solutions compared. What is the independent variable? Okay, this would be very easy for people who took the practical classes in their schools or in their colleges. So basically, the independent variable is the one which is dependent in our hands. Like we change them, so the answer, so the constant basically is not changed, but the independent variable we can change to find out the results for the values for the experiment. Okay. So it says to estimate the concentration of glucose, equal volumes. Now, equal volumes mean the volume is the constant. Volume is constant, we can't change the volume. Of known concentrations of glucose for each mixed with the same excess volume of Benedict solution. The solutions were placed in the thermostatically controlled water bath, but here we know with a range. With a range. What does it say? With a range of known concentrations of glucose. So concentration of glucose, this is maybe the answer, but let's read it. Final color of the solution? No, this is the result. Temperature of the water bath? No. Volume of the glucose solution? It said that it is constant. So no, this is also no. So 7A. 7A. Which statements are correct for amylose and also for amylopectin? Okay, so amylose and amylopectin, we know that both of them have alpha 1 4, alpha 1 4, but amylopectin also has alpha 1 6. It is branched. That's what amylose isn't branched, right? So, for 1 second. Yep. So amylose and amylopectin are both carbohydrate molecules. Absolutely right. They are both formed by condensation reactions. Yes. And they are linear. No, they're not linear molecules because amylose is not a linear molecule. Wait. Amylose is a linear molecule, but amylopectin is not because amylopectin has the alpha 1 6 glycosidic linkage, which means it is branched. So this is absolutely wrong, and they contain the 1 4 glycoside. Yes, absolutely right. So 1 2 and 4, 1 2 and 4. B is the answer. Which statement is correct comparison between saturated triglyceride molecules and unsaturated triglyceride molecules of approximately the same molecular masses? Okay, so if we know, saturated means no double bonds between carbon double bond between carbons, like carbon double bond present नहीं है वहाँ पर. Unsaturated वो होता है जहाँ पर carbon double bond present. Wait, am I wrong? Wait 1 second. सैचुरेटेड वो होता है जहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. लेकिन अनसैचुरेटेड वो होता है जहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. तो इसकी वजह से ये होता है कि लेट्स रीड द ऑप्शंस, राइट. अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स हैव मोर डबल बॉन्ड्स. Unsaturated double bond. अच्छा, so let me give you this technique or maybe this explanation that triglyceride
Saturated triglycerides also has a double bond, but not between the carbon, it has between the carbon and oxygen. ओके, सो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो है डबल बॉन्ड होता है. ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड होता ही नहीं है, डबल बॉन्ड होता है लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में नहीं होता. तो अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स के पास जो है डबल बॉन्ड्स बहुत होते हैं. ये जो है यहाँ पर अनसैचुरेटेड के पास बिल्कुल सही बात है. एंड फ्यूअर हाइड्रोजन एटम्स, और हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं देन सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स. आई गेस ए इज करेक्ट, बट लेट मी गिव यू अ complete explanation for this. So if we see this, for example, let me show you a simple diagram for this. अब कार्बन कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर इसके पास, अच्छा, डू यू गाइज नो दैट कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स, राइट? कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स. अब अगर यहाँ पर हम देखें, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, कार्बन के पूरे चार बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए ना. तो यहाँ पर ये भी कार्बन है. अब इसका 1 2 3, ठीक है. अब यहाँ पर 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया. अब अगर यहाँ पर हम डबल बॉन्ड डाल देते हैं, यहाँ पर अगर हमने डबल बॉन्ड डाल दिया तो इसके 4 बॉन्ड्स तो कंप्लीट होंगे, लेकिन हाइड्रोजन इसके पास कम होंगे. क्यों होंगे? देखो भाई, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया. इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा ना, ये सिर्फ एक हाइड्रोजन है. बाकी सबके पास तो 2 2 थे, 3 3 थे. यहाँ पर तो सिर्फ एक है. तो इसलिए फ्यूअर हाइड्रोजन एटम्स देन सैचुरेटेड, इसके पास ज़्यादा होंगे हाइड्रोजन, इसके पास कम होंगे हाइड्रोजन. दैट इज़ वाई हमारा ए आंसर है. ठीक है. 10. द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल सरफेस मेम्ब्रेन. ठीक है, ये सेल सरफेस मेम्ब्रेन है. सेल सरफेस मेम्ब्रेन को आपको पता है कि भाई फॉस्फोलिपिड जो है बायलर होती है उसके पास. ये जो है आपका होता है अपना हाइड्रोफिलिक. ये जो टेल्स होती, ये जो हेड होता है, ठीक है, ये हेड होता है पोलर हेड. वेट 1 सेकेंड. हाँ, ये जो हेड होता है आपका वो होता है पोलर हेड. ये जो होता है आपके पास टेल्स जो होती हैं आपके पास, वो होती हैं हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक मीन्स नॉन पोलर. ठीक है. Which description of one of the labels is correct? Fatty acid at the hydrophilic end of the molecule. अगर हम फैटी एसिड होता है हाइड्रोफिलिक है, इसके साइड पे जो है हाइड्रोफिलिक है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत बात है बिल्कुल. हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ द ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोफोबिक एंड है ऑफ द ट्राइस, नहीं बिल्कुल गलत बात है, ये तो बिल्कुल नहीं गलत बात है. हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, नहीं बिल्कुल नहीं. ग्लिसरॉल कहाँ से आ गया भाई इसमें? ग्लिसरॉल तो वो उसमें ट्राइग्लिसराइड में होता है, ये तो सेल सरफेस मेम्ब्रेन में है. यहाँ पर तो वो होगा फॉस्फोलिपिड बायलेयर में, तो एक फॉस्फेट का ग्रुप बन जाता है ना हमारा. डी आ गया, फॉस्फेट ग्रुप एट द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ द मॉलिक्यूल. हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि भाई ये जो है हमारे पास कहाँ गया, हाँ, डी जो है हमारे पास वो है फॉस्फेट ग्रुप. ये हमारा जो है वो है फॉस्फेट ग्रुप एट द हाइड्रोफिलिक एंड. ये हमारा हाइड्रोफिलिक है ना, क्योंकि हमारा पोलर हेड है, तो इसलिए हमारे पास ये डी आंसर है इसका. ठीक है. So we move to the 11th question of this paper, and which row correctly shows levels of protein structure that can be held together by each type of interaction. Okay, so for this we have to memorize some things, which is okay, so I'll let you guys know. For primary structure there are only peptide bonds, right? For secondary, if we talk about the secondary structure, we have the hydrogen bonds. For tertiary, we have many. We have hydrogen, we have disulfide, we have ionic, and we have hydrophobic. Mind my writing please. Hydrophobic interactions, right? So this is asking that which row correctly shows the levels of protein structure that can be held together by each type of interaction. So we have to find the correct one, right? Hydrogen bonds, so this is saying hydrogen bonds has primary, secondary and tertiary structure. Secondary and tertiary. Wait, let us see. Secondary में जो है हाइड्रोजन जो है वो secondary में है और tertiary में है. बस सेकेंडरी और टर्शरी, मतलब सी और डी में से हमारा कोई आंसर है. हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस जो होती हैं वो सिर्फ टर्शरी में प्रेजेंट होती हैं, मतलब टर्शरी मतलब सी या डी, इसमें भी सी या डी में कॉम्प्लिकेशन हो गई. कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ना, अब कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है हमारे पास वो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, दीज आर द कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट. सो अभी इसमें जो है हमारे पास आ जाता है
प्राइमरी एंड टर्शरी या प्राइमरी एंड सेकेंडरी? नहीं, सेकेंडरी में नहीं होता। सेकेंडरी में हमारे पास होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उसमें नहीं होता हमारे पास जो है प्राइमरी और टर्शरी में होता है जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, जो प्रोटीन के जो बॉन्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो गई, वो एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है हमारे पास। तो इसलिए 11 जो है हमारे पास आंसर है सी, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। विच मॉलिक्यूल्स कंटेन्स एटलीस्ट 3 डबल बॉन्ड्स? 3 डबल बॉन्ड्स हमारे पास कोलेजन और हेमोग्लोबिन। ये बात हमेशा याद रखनी है कि कोलेजन और हेमोग्लोबिन में बहुत सारे डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स बहुत सारे होते हैं। सैचुरेटेड में जो है हमारे पास इसमें जो है हाँ, इसमें भी हमारे पास जो है सैचुरेटेड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड्स होते हैं। इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, दे डिडंट स्पेसिफाई कि हमारे पास कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन से डबल बॉन्ड्स, बस डबल बॉन्ड्स होने चाहिए एटलीस्ट 3। तो सैचुरेटेड में भी होते हैं हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स में 3 डबल बॉन्ड्स, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड है ना, मतलब 3 ग्लाइसराइड्स, ठीक है, उसमें हमारे पास 3 डबल बॉन्ड्स होंगे। तो डी इज़ द आंसर। Which diagram correctly shows hydrogen bonding between 2 water molecules? अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास आपको पता है कि H होता है और O होता है। H के ऊपर जो है पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर जो है पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। अब हमारे पास आ गया कि भाई देखें, और हमेशा अगर हम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को मिला रहे हैं तो इन दोनों का बॉन्ड बनेगा। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा, मतलब पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव का बॉन्ड बनेगा। तो पार्शली पॉजिटिव हमारे पास जो है ये आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ये आ गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 13 का आई गेस द आंसर शुड बी ए। लेट्स सी, wait, I did a big blunder in this. Not a fully positive charge, it should be a partially positive charge and a partially negative charge, right? तो यहाँ पर H और O और H का बॉन्ड बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर भी ऐसे बन रहे हैं, बिल्कुल सही है। चार्जेस भी बिल्कुल करेक्ट हैं, तो B इज़ द आंसर। 13 का हमारे पास आंसर जो है दैट इज़ B। Which statement describes an example of an extracellular enzyme? अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है जो सेल होता है हमारे पास, जो ये हमारे पास सेल है, उसके बाहर जो एंजाइम होता है ना प्रेजेंट, जो उसके अंदर जाके और जो है केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। तो वो होता है हमारे पास, आपने पढ़ा होगा जो इस बुक्स में, कैम्ब्रिज की बुक्स में लिखा हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो। तो अमाइलेज इन सलाइवा इज एन एंजाइम दैट कैटलाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इन द माउथ। बिल्कुल सही बात है, अगर अमाइलेज जो है हमारे सलाइवा के अंदर वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को जो हम खाते हैं, बिल्कुल सही बात है ये तो। कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो वहाँ पर उसके अंदर होता है, सेल के अंदर होता है वो। डीएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो सेल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15, which row is correct for enzymes that catalyze reactions using the lock and key hypothesis? Effect of enzyme on the activation energy. enzyme जो है हमारे पास वो एक कैटलिस्ट होता है, वो कैटलिस्ट जो है हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। हमारे पास ग्राफ होता है ना, ये हमारे पास एक ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारे पास है एक्टिवेशन जिसमें कैटलिस्ट हमारे पास रिक्वायर नहीं है, ठीक है, और ये हमारे पास ग्राफ है जहाँ पर कैटलिस्ट एंजाइम प्रेजेंट है हमारे पास, तो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लोअर हो जाती है, इससे लोअर हो जाती है हमारे पास। तो ए और बी में से हमारे पास वी हैव द आंसर। शेप ऑफ द एक्टिव साइट इन कंपैरिजन टू द सबस्ट्रेट changes to become complementary as the enzyme substrate complex forms. Nope. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में चेंजेस नहीं आते हमारे पास, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, हाँ, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमेशा। जो एक्टिव साइड होती है हमारे पास वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होती है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो 15 का बी इज़ द आंसर। A scientist investigated the rate of breakdown of hydrogen peroxide. 4 experiments were carried out using different mixtures: substrate only, substrate plus enzyme plus non-competitive inhibitor, and substrate plus enzyme plus non-competitive inhibitor. The results are sketched in the graph. Which row shows the correct lines for 2 of the experimental mixtures? ये हमारे पास ग्राफ बना हुआ है। अच्छा,
तो यहाँ पर हमारे पास है रेट ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, हमारा रेट इंक्रीज तब होगा जब हमारे पास एंजाइम होगा, जब हमारे पास सबस्ट्रेट होगा, दोनों बाइंड करेंगे, एनर्जी देंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो 4 हमारा है ना, 4 में हमारा बिल्कुल ही कम रेट है। क्यों कम रेट है? क्योंकि हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन तो है, लेकिन एंजाइम तो हमारा है ही नहीं, तो दैट इज़ वाई हमारा रेट जो है वो बहुत कम होगा, ठीक है। इसकी वजह से 4 अगर हम देखें, यहाँ पर है सबस्ट्रेट ओनली, यस, बी और डी में से कोई आंसर है। सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम प्लस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये हमारे पास तब होता है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है हमारे पास। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट और एंजाइम होता तो हमारा ग्राफ की ग्रेडियंट जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। हमारा ग्राफ की जो ग्रेडियंट है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर वो ऐसे करके इसका ग्राफ बनता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में हमारे पास उससे थोड़ा कम ग्रेडियंट होता है और फिर ऐसे बनता है, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में हमारे पास उससे ऐसे बनता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम 3 की बात करते हैं, 3 हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, लेकिन ये हमसे पूछ रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में पूछ रहे हैं। सो दैट इज़ वाई हमारा ग्रेडियंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसका थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आके वहीं हमारा मैच होगा जहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट और एंजाइम मैच कर रहा था। तो इसके लिए हमारा आंसर है 2, 4 and 2, which means B is the answer. So 16 का B is the answer. 16. Which of these substances can pass directly to the cell surface membrane without using a carrier protein or a channel protein? So हमारे पास जो विथाउट बोल रहा है, तो कैरियर और चैनल हमारे पास तब होता है जब हमारे पास आयंस होते हैं, और ये जो है हमारे पास होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो आयंस जिसमें रिक्वायर होते हैं उसमें कैरियर और चैनल होता है, लेकिन ये बोल रहे हैं विथाउट यूजिंग। सो हमारे पास 1 तो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देंगे हम, तो मतलब हमारे पास A और B तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गया। CO2 और C6H12O6 मतलब ग्लूकोज है हमारे पास। तो इसमें जो है हमारा ये बहुत ही एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। सो दैट इज़ वाई वी विल एलिमिनेट दिस, बिकॉज दिस विल नॉट पास विथआउट कैरियर और चैनल प्रोटीन, राइट। इसमें तो ये तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड एक सूटेबल लग रहा है मुझे, तो 17 का डी आंसर है। 17 का, लेट मी चेक द मार्किंग स्कीम, वेट, हाँ 17 का डी आंसर है, राइट। What happens to the surface area to volume ratio of a cube when the length of each side is doubled? Okay. जब भी आपके पास ऐसे सवाल आए ना, तो आप एग्जाम्पल्स लिया करो, आप लेट किया करो कि भाई मेरे पास ये एक लेंथ है, 2 आपके पास क्यूब्स हैं, ठीक है, ये आपके पास एक क्यूब आ गया, ये आपके पास दूसरा क्यूब आ गया। तो बोल रहे हैं कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है डबल्ड हो गया है। तो अगर हमारे पास इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2, इसका है 4। अच्छा, लेंथ की बात कर रहे हैं, राइट, लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर हम इसका बात करते हैं वॉल्यूम की, तो हमारे पास, हमें पता है कि लेंथ क्यूब का जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो है लेंथ क्यूब। तो 2 क्यूब होता है हमारे पास 8, इसका आ गया 4 4 16, 16 4 इज़ 1 सेकेंड, यप। सो हमारे पास जो है इसका आ गया वॉल्यूम 4 4 16, 16 4 64। सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास विद द फार्मूला 6L स्क्वायर। तो 6 2 स्क्वायर विच इज़ 24 एंड इसका आ जाता है हमारे पास 6 4 स्क्वायर विच इज़ 96। द एरिया फॉर दिस इज़ 96। सरफेस बोल रहे हैं कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकालना है। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकालने के लिए 24:8 एंड 96:64। तो हम अगर निकालते हैं, ये आ गया हमारे पास 3:1 और ये हमारे पास आ गया 1.5:1 आ रहा है। तो मतलब ये हमारे पास कर देंगे 3:2 में भी, हाँ 3:2। ये हाफ हो रहा है, ये बिल्कुल ही हाफ हो रहा है हमारे पास। द रेशियो इज़ हाविंग। तो हमारे पास आंसर होगा 18 का बी आंसर। यप, सो 18 इज़ बी, 18 इज़ बी, यप। Which events are part of the mitotic cell cycle? Mitotic cell cycle की अगर हम बात करें तो mitotic cell cycle में हमारे पास आ जाता है इंटरफेज, मेटाफेज
सॉरी इंटरफेस के इसके बाद हमारा जो है ना मतलब जो न्यूमोनिक है वो है PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उससे पहले हमारे पास आता है इंटरफेज, तो ये सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। इंटरफेज भी है बिल्कुल, टेलोफेज भी है बिल्कुल। टेलोफेज के अंदर जो है हमारे पास साइटोकाइनेसिस भी होती है। तो 19 का हमारे पास है ए, 19 का हमारे पास ए आंसर है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, the estimated total number of red blood cells in the human body is 2.5 multiplied by 10 की power 13. It estimated that each day 2.5 multiplied by 10 की power 11 red blood cells are removed और रिप्लेस हो जाते हैं। कितने परसेंट होते हैं वो हमें निकालना है। ओके, तो इसको निकालने के लिए हम डिवाइड कर लेंगे सिंपली 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, वेट अ सेकेंड, लेट मी डू 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे कि हमारी बॉडी में जो है, हमारी बॉडी में इतने हैं, ठीक है, उसको हम जो है इतने रिमूव कर रहे हैं, तो इसमें से हम इतने रिमूव कर रहे हैं। तो सवाल है कि कितने जो है रिप्लेस कर रहे हैं आप। तो 2.5 इसको आप क्या करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 13 अपॉन 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11, ये हमारे पास करेंगे हम कैलकुलेटर में, तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा सी, 1%। 1% जो है हम रिप्लेस कर रहे हैं। वेट अ सेकेंड, यप, सी इज आंसर। हाँ, so we have now DNA polymerase catalyzes condensation reactions between molecules during semi-conservative replication of DNA. What is joined by DNA polymerase? DNA polymerase के साथ क्या क्या join होता है? तो we have जो DNA polymerase एक एंजाइम होता है जो सिंथेसाइज करता है। DNA हो गया ना हमारे पास, सॉरी, वेट अ सेकंड, यप, तो ये हमारे पास DNA का डबल हेलिक्स आ गया। यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को करता है। सो न्यूक्लियोटाइड मैनी स्टूडेंट्स वुड बी लाइक कि फॉस्फेट और राइबोस सही आंसर है। फॉस्फेट और राइबोस बिल्कुल सही आंसर तो है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर राइबोस है। ये बोल रहे हैं कि रेप्लिकेशन ऑफ DNA के अंदर राइबोस नहीं होता, वो डीऑक्सीराइबोस होता है। यहाँ पर क्या होता है, deoxyribose. So that is why D is the wrong answer. In the examiner report, many students have ticked D, right? तो हमारे पास C आंसर है, बिल्कुल सही बात है। 2 nucleotide strands make up a DNA molecule. Which description is correct? The percentage of cytosine is 50% of that of guanine in the whole molecule. अच्छा, यहाँ पर अभी ये ट्रिक ये है कि यहाँ पर whole molecule है और ये जो है each strand है। तो this is a trick question. So yup, अगर हमारे पास साइटोसाइन जो है वो 50% है और ग्वाइनिन भी 50% है, तो C और G तो बन गया, A और T गए कहाँ आखिर? A और T ऐसे थोड़ी हो सकता है, तो A तो बिल्कुल ही गलत आंसर है। The percentage of cytosine is the same as that of guanine in the whole molecule. Yup, this is the correct answer. Because the whole molecule ना, अगर हम दोनों की बात करते हैं, पूरे molecule की बात करते हैं हम, तो हमारे पास ऐसा बनता है, क्योंकि स्ट्रैंड्स तो डिफरेंट से हमारा सिंथेसाइज होता है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास एक ही स्ट्रैंड से सब कुछ बने जा रहा है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जो होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास हाफ स्ट्रैंड यूज होता है, लेकिन वो एक अलग स्ट्रैंड से जाके बनता है। तो 2 स्ट्रैंड्स होंगे, ईच स्ट्रैंड तो बिल्कुल ही गलत है। और साइटोसाइन इज सेम इन ईच स्ट्रैंड, नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। तो साइटोसाइन अगर सेम होगा तो ग्वाइनाइन पे अफेक्ट होगा, फिर वो कैसे बनेगा, कैसे आखिर? तो बी आंसर है हमारा। 23, हाँ, the PDX1 protein is found in a wide range of animal species where it is regarded as essential for normal metabolism. In sand rats, the gene coding for the PDX protein has a much lower proportion of ANT nucleotides than PDX1 genes from other animals. Finding the complete DNA sequence of the PDX1 gene in the sand rats has been difficult. Sequencing involves splitting of the nucleotides, हाँ बिल्कुल splitting of सही है, at one at a time from single stranded DNA. What could account for the difficulty in finding
DNA sequence of the PDX1 gene in sand rats. The PDX1 gene is present in only a small proportion of nuclei. अगर ये स्मॉल प्रोपोर्शन में है तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी तो अनअकाउंट नहीं हो सकती ना. हम उसमें भी तो कर सकते हैं ना, मतलब हम उसमें भी तो डीएनए सीक्वेंस को देख सकते हैं. डीएनए सीक्वेंस तो एक बिल्कुल स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी में हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो 1 तो गलत आंसर है. 1 जो है हमारा डिफ़िकल्टी नहीं ला सकता. PDX1 इज ट्रांसक्राइब्ड इन ओनली सम सेल्स. अगर भले ही स्मॉल सम सेल्स में हो, हम डीएनए सीक्वेंस तो निकाल सकते हैं ना उसमें से भी. तो 2 भी गलत आंसर है. द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट है. अगर किसी हमारे समझें कि किसी न्यूक्लियोटाइड्स में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रेंथ मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी में वीक है, दैट वुड क्रिएट अ डिफिकल्टी. डी इज द आंसर. 3 इज द आंसर. Different tissues in a plant were supplied with radioactively labeled substance to identify which tissues was actively synthesizing mRNA. Which radioactively labeled substances would be suitable for this experiment? अच्छा, सही. तो mRNA का हमें निकालना है कि कौन से जो टिश्यूज़ जो हैं वो वहाँ पर लेबल किए हुए हैं उन्होंने, और उसके पास जो है कौन सा सूटेबल होगा. ठीक है. तो इसको निकालने के लिए mRNA के अंदर हमारे पास ATGC would be suitable. एडेनाइन जो है हमारे पास दोनों में होता है. ठीक है. इसको हम इतने एक्यूरेटली हम नहीं देख सकते. वो एक्सपेरिमेंट हम जो है वो देख नहीं सकते, हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस, राइट. तो एडेनाइन तो नहीं. यूरेसिल, यप, बिकॉज इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द RNA, द mRNA. And inorganic phosphate is also present in both of them. Ribose is also only present in mRNA. So 2 and 4, C answer. Yeah. Which row correctly matches the structure and the function of phloem sieve tube elements? फ्लोम सीव ट्यूब एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, फ्लोम सीव ट्यूब एलिमेंट्स, तो ये जो है अंदर से सब्सटेंस होते हैं. इसमें मिनरल, इसमें जो है वो सुक्रोज होता है. तो दैट इज़, और इसके अंदर वो भी होता है ना, सीव पोर्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास. तो ये हमारे पास एक सेल है. सीव ट्यूब एलिमेंट्स हमारे पास एक सेल है. इसका स्ट्रक्चर और हमें फंक्शन बताना है इसका. तो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म बिल्कुल होता है, न्यूक्लियस नहीं होता. न्यूक्लियस इसमें फ्लोम सीव ट्यूब एलिमेंट्स में नहीं होता. कंपेनियन सेल जो इसके बिल्कुल बराबर में होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस हमारे पास होता है. बिकॉज ये जो है हमारे पास ये जो द कंपेनियन सेल प्रेजेंट बिसाइड्स द फ्लोम सीव ट्यूब एलिमेंट्स इज नॉट ओनली बिकॉज इज नॉट बिकॉज ऑफ द what do we say that structural function. It does not provide structural function but metabolic activities, the loading and unloading of sucrose and molecules. That is why it is present. So this is absolutely right. And the function says to provide as little resistance to flow as possible. Absolutely right, because that is इसलिए वजह से तो इसके पास जो है न्यूक्लियर पोर्स और ये जो सीव ट्यूब पोर्स होते हैं हमारे पास, और जो न्यूक्लियस प्रेजेंट ना होने की वजह है कि रेजिस्टेंस ना हो फ्लो होने में, जल्दी फ्लो करता जाए, लोडिंग और अनलोडिंग होती जाए. सो दैट इज़ वाई बी इज़ द आंसर. ए इज़ द आंसर. 26. Which feature of xylem vessel elements helps adhesion during transpiration? Adhesion जो है हमारे पास वो होती है the water molecules, the H2O and the walls. तो walls के साथ जो होता है वो adhesion होती है हमारे पास. तो which feature of xylem vessel elements helps adhesion during transpiration? इसका हमारे पास आंसर है कि lignin forms lignin forms a complete secondary wall. What? Lignin forms a completely secondary wall? No. New vessels carry extra water as the plants grow. नहीं, एक्स्ट्रा वाटर का क्या हुआ इसमें. देर आर नो क्रॉस वॉल्स बिटवीन द वेसल एलिमेंट्स. देर आर क्रॉस वॉल्स बिटवीन द वेसल एलिमेंट्स दो ड्यूरिंग there are no cross walls though, but this will not help during transpiration for the it does not match the question which is asking. Let's find the vessel elements form a narrow tube. Yes, because H2O molecules bind with the walls and during transpiration what happens is कि diameter जो है उनका कम हो जाता है, उनका diameter जो है वो narrow हो जा रहा होता है. that is why
D is the answer. A, B और C तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहे. Mass flow is the bulk movement of materials from one place to another. How many of the vessel elements listed carry fluids by mass flow? Mass flow bulk movement होती है. How many of the vessels carry fluids by mass flow? Okay, so this is a very easy question. Mass flow, artery, yes, blood, phloem, sieve, tube, yup, because कंपेनियन सेल होता है तो सुक्रोज करता है, वेन करता है, यस, एंड जाइलम वेसल भी करता है, बिल्कुल सही बात है. तो व्हाट्स इट्स आस्किंग? ओह ओके, हाँ मेनी, ओके 4, डी, ऑल ऑफ देम. We have 28 cellulose, lignin, suberin are components of various plant cell walls. Description of these cell wall components are listed. A component of the Casparian strip. Okay, component of the strip redirects water into symplasm pathway. Hydrophobic component of cell walls. Water interacts with the molecule in the apoplast pathway. Which row correctly matches 3 of the descriptions with the cell wall components? ओके, सेल्यूलोज की अगर हम बात करते हैं, सेल्यूलोज हमारे पास कॉम्पोनेंट नहीं. रीडायरेक्ट वाटर इनटू द सिम्पलेस्ट पाथवे नहीं. हाइड्रोफोबिक मूवमेंट ऑफ द सेल वॉल्स नहीं. वाटर इंटैक्ट्स विद द मॉलिक्यूल इन द एपोप्लास्ट पाथवे हाँ, बिकॉज वहाँ पर जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जो हमारे पास स्ट्रिप आती है, विच इज़ वाई सेल्यूलोज जो सेल वॉल होती है उसके अंदर सेल्यूलोज होता है, उसके ज़रिए जो है हमारे पास एपोप्लास्ट पाथवे होता है. एपोप्लास्ट पाथवे इज द मूवमेंट ऑफ वाटर विच मूव्स द वाटर फ्रॉम द सेल वॉल टू सेल वॉल, नॉट फ्रॉम द प्लाज्मोडेस्माटा टू द सेल मेम्ब्रेन एंड टू द वैक्यूल, एंड इससे बीच में से पास नहीं होता, वो सेल वॉल टू सेल वॉल पास होता है. दैट इज़ वाई वी हैव द आंसर एज सी और डी. ओके, लिग्निन की अगर हम बात करें तो लिग्निन वी हैड अ हाइड्रोफोबिक कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल वॉल्स. यहाँ पर ये जो है हमारे पास सेल वॉल्स में जो हाइड्रोफोबिक मूवमेंट होती है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द लिग्निन. तो 4 का वी हैव 3, इसका 3 था, तो डी इज आंसर मे बी, बट लेट मी रीड द suberin one. Suberin is the waxy and it is a waterproof layer of the Casparian strip. So 1, D is the answer. 28 का है हमारे पास D. The arrows show the direction of water movement across a plant root from water in the soil to the xylem, right? तो which arrow shows water movement only through the apoplast pathway? हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करते हुए आए हैं कि apoplast pathway is from cell wall to cell wall, right? ये हमारे पास बीच में से जा रहा है. दिस इज़ द प्लाज्मोडेस्माटा, दिस इज़ द व्हाट डू वी से सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाद वैक्यूल, एंड देन दिस इज़ अगेन द प्लाज्मोडेस्माटा. दिस मूवमेंट्स आर रॉन्ग, these are wrong. 1, 3, 5, 7, 8 is wrong. This is absolutely wrong. 1, 3, 5, 7, this is absolutely wrong. If we see 2, 4 and 6, so this is 2, cell wall right, cell wall to cell wall right, सेल वॉल नो, सेल वॉल टू सेल वॉल नहीं हो रहा, सेल वॉल के बाद वो जा रहा है उसके अंदर, दैट इज़ वाई 6 इज़ रॉन्ग. तो 2 and 4 सी. वेयर डू वी डू सी? 29 सी. अप. Which row correctly identifies sources and sinks of sugars? Root cells absorbing mineral iron. Root cells absorbing mineral ions. जो भी चीज़ हमारे पास एब्जॉर्ब होती है ना, जो मतलब वहाँ पे that thing is present as for a food source or for example where it is actively working, that is known as the sink, right? Sink. So root cell absorbing, that means sink. A और B में से हमारे पास आंसर है. Storage cells, no. Source जो है that is for storage. Source is for the storage. So storage cells seed that is starting to grow, but storage cells, right? That is for the source. So 30 is A. The photomicrograph shows a section through a tissue with an artery. Which row correctly shows the type of artery and whether the blood inside the artery is oxygenated or deoxygenated? 1 second, guys. Yeah.
The photomicrograph shows a section through a tissue with an artery. Which row correctly shows the types of artery and whether the blood is inside the artery is oxygenated or deoxygenated? So what type of artery do you think this is? What type of artery do you think this is? हमेशा आर्टरी की अगर आप देखो ना तो उसके अंदर इलास्टिक होता है, उसके अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं और उसके अंदर कोलेजन प्रेजेंट होता है, राइट? उसके अंदर कोलेजन भी प्रेजेंट होता है. तो अगर हम इसको देखें ना, this has, wait, let me show you guys, this has a lot of smooth muscles inside. This is smooth muscles, right? You can see this is smooth muscle and ये बिल्कुल एक hollow है, बिल्कुल hollow है, एक hollow चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है this type of artery is muscular and blood जो है हमारे पास वो है हमारे पास, wait, let me read it again. Correctly shows the type of artery whether the blood inside the artery is oxygenated or deoxygenated. It is oxygenated. आर्टरी के जो है, आर्टरी के अंदर जो है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, क्योंकि आर्टरी comes out, the aorta, the artery comes out from the heart towards the rest of the body, so that is oxygenated blood, right? But the mark scheme says okay, so this is a very trick question. Okay, this we have to use our brains enough. If we see the diagram, this is a muscular artery. This is a muscular artery, and if we have read from our syllabus, from our course, so we have been told that जब हमारे पास heart है, उस heart में से जब हमारे पास artery निकल रही है, the artery has a lot of elasticity. Elastic होता है, जब नीचे आ रही होती है फिर वो मस्कुलर में चेंज हो जाता है, राइट? मस्कुलर मिस फिर जो है उसके बाद मस्कुलर फाइबर ज़्यादा होती हैं, इलास्टिक फाइबर्स नहीं होती इतनी ज़्यादा. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ व्हाट वी हैव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है? तो 31 वी हैव. Heart surgery may cause a decrease in transmission of impulses in the Purkinje tissue to the right side of the heart. Heart surgery may cause a decrease in the transmission of impulses in the Purkinje tissue. What is the possible effect of this decrease? So, impulses would be delayed by the atrioventricular node. No, this is impossible because Purkinje tissue is after the atrioventricular node, right? So this is absolutely wrong. The muscle of the right ventricle, the right, like this side, right ventricle, would contract slightly more slowly than the muscle of the left ventricle. Absolutely right, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि पर्किंजी टिश्यू में अगर हमारे पास हार्ट सर्जरी हो रही है और इसमें इम्पल्सेस हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम करेगा ना, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, उसको टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाए और ब्लड को पास कर पाए. सो दैट इज़ वाई बी इज़ द करेक्ट आंसर. 33. The diagram shows a network of blood vessels that supply blood to muscle tissue in the human body. Artery हमारे पास होती है ये है हमारे पास the node and this is the capillary, this is the vein, right? ये हमारे पास X जो है हमारे पास वो है arteriole, yeah. What is the correct comparison between the blood at X? The X is the arteriole, between the blood at Y when the blood is when the muscle tissue is at rest. This is very important. Muscle tissue is at rest and why की बात कर रहे हैं. So क्या कहते हैं, wait 1 second, yeah. Blood pressure at X compared with blood pressure at Y. So blood pressure at X, आर्ट्रियल के पास जो है प्रेशर ज़्यादा होगा ना, आर्टरी के पास ज़्यादा होता है, फिर आर्ट्रियल के पास कम हो जाता है, Y के पास कैपिलरी के पास तो उससे लोअर होगा ना, तो ब्लड प्रेशर एट Y would be higher, C and D. And if we see the water potential of blood at X compared with the at Y, so this X would have water potential at a higher water potential. आर्ट्रियोल के पास जो है ब्लड प्रेशर हायर वाटर पोटेंशियल हायर होता है. कैपिलरी के अंदर जो है फिर वाटर भी होता है, फिर उसके अंदर जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए हमारे पास ग्लूकोज भी ट्रैवल कर लेता है. सो दैट इज़ वाई दिस विल हैव अ हाई वाटर पोटेंशियल. 33 का है हमारे पास. Scientists have shown that the oxygen dissociation curves for the hemoglobin of smaller mammals are to the right of those of larger mammals. Okay, what does this suggest about the hemoglobin of smaller mammals? At low partial pressures of oxygen, it binds oxygen more strongly
then hemoglobin of larger. Absolutely wrong. जब लो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन के साथ तो more lightly bind करेगा ना. It saturates with oxygen at lower partial pressure of oxygen than hemoglobin of larger mammals. नहीं, ये सेम ही बात हो गई कि लोअर पार्शियल प्रेशर पे सैचुरेट नहीं हो, मतलब सैचुरेट होगा लेकिन हाई पार्शियल प्रेशर पर ज़्यादा सैचुरेट होगा. गलत बात है बिल्कुल. सी, इट रिलीजेज ऑक्सीजन मोर इजीली देन द हेमोग्लोबिन ऑफ लार्जर मैमल्स. जो हेमोग्लोबिन होते हैं लार्जर मैमल्स का, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा ट्रैवल रिलीज करेगा. बिल्कुल सही बात है. सी इज आंसर. बिल्कुल सही बात है. 35. What is an effect of the increased concentration of carbon dioxide in the blood? Okay, so increased concentration of carbon dioxide in the blood. If we know carbon dioxide plus, carbon dioxide plus water gives us the carbonic acid by the carbonic anhydrase, which is the enzyme. Okay, this is to lower the activation energy, to speed up the reaction. So it asks, कौन सा एक अफेक्ट है जो इंक्रीज करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन हमें इंक्रीज़ करनी है तो हमें जो है हमारा क्या बन रहा है, कार्बनिक एसिड बन रहा है, राइट. तो हमें एसिड H+ की आयन जो है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा. H+ की आयन इंक्रीज़ होती है किसी एसिड से, किसी एसिड से. तो एसिड तो ये आ गया हमारे पास, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिनिक एसिड. बिल्कुल सही बात है. बी इज आंसर. 2 of the requirements of an efficient gas exchange system are a large surface area and a short diffusion distance. Which row correctly describes how alveoli are adapted to meet these requirements? 2 of the requirements of an efficient gas are a large surface area and a short diffusion distance. How alveoli are adapted? Okay. Large surface area. So large surface area, elastin fibers prevent the alveolus wall from collapsing. Large surface area और elastic fibers. बिल्कुल गलत बात नहीं हो गई है, ये कोई रिलेट ही नहीं करता इस चीज़ को. B, gases dissolve in a layer of liquid to speed up diffusion. Gases dissolve in a layer of liquid. Maybe yes, we can say, but how to speed up the diffusion? Maybe we can say, because the gases, for example, oxygen, carbon dioxide, diffuse in the blood, right, for the diffusion purposes. Maybe this is correct. Let's look for the short diffusion distance. Alveolar walls are next to the capillaries. Nope. 36, no. This is absolutely wrong. Large surface area, alveoli are folded and interconnected. Yes, this is the best choice we can choose. Alveoli जो fold होते हैं, interconnected हुए होते हैं, उसकी वजह से हमारे पास large surface area होता है कि वो diffusion कर पाए. और ये है short diffusion distance. Walls of alveoli are only 1 cell thick. बिल्कुल सही बात है कि एक cell thick होती है. That is why हमारे पास diffusion जो distance होता है वो small होता है. 36 is C. What defines infectious diseases? Symptoms are caused by a bacterium that passes from contaminated air, soil or water to the host. Nope. Correct. Contaminated air मतलब क्या? Soil or water. This is only because we are defining to one particular disease, but this is talking about infectious diseases. So symptoms are caused by pathogen. Yes, pathogen के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, vast होता है. This is transmitted from one. बिल्कुल सही बात है. 37 का B आंसर है. A hurricane destroys a large town of an island. A hurricane destroys a large town on an island. People move away from the town and set up tents where sanitation is poor. Which disease is most likely to spread within a week of the change in living conditions? So, देखो, अगर हम बात करें ना, टीबी जो है ना वो ऐसे ही नहीं आ जाती. और टीबी जो आती है वो एनिमल से आती है, वो हमारे पास एयर से आती है जहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, आवाम बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर सब जो है कंटामिनेटेड हुए होते हैं. मलेरिया जो होता है हमारे पास वो होता है मच्छरों से, वो होता है एक होस्ट से जो एनोफिलिस मॉस्किटोज से. HIV तो वो होता है कि HIV तो हमारे पास किसी क्या कहते हैं, ऐसी जो
किसी और ने इस्तेमाल की भी हो, फॉर एग्जांपल ब्लड हो गया, या फॉर एग्जांपल जो कंटामिनेटेड जो यूटेंसिल्स होते हैं उससे हो गया, HIV सेक्सुअल एक्टिविटी से होता है, तो ये भी नहीं। और कॉलेरा एक अच्छा ऑप्शन है। कॉलेरा मतलब क्योंकि सैनिटेशन पुअर है वहाँ पर, तो दैट इज़ वाई कॉलेरा इज़ द बेस्ट चॉइस वी कैन चूज। मे बी 38A या 39. Which statement correctly explains why viruses are unaffected by penicillin? Viruses are unaffected by penicillin because penicillin is an antibiotic. Yeah, penicillin is an antibiotic. Let's see. Affects host cell metabolism? Nope. Only binds with 70S ribosomes? Nope. It's penicillin जो ना बेसिकली वो हमारे पास बैक्टीरिया की जो ना सेल वॉल पे डिपेंड करता है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ओके, पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ओनली ब्लॉक्स नो, only blocks peptidoglycan synthesis. Yes, 39D हमारे पास आंसर है। 40. Which processes characterize the mode of action of phagocytes? तो इसका आंसर जो है हमारे पास आ जाता है मोड ऑफ एक्शन ऑफ फेजोसाइट्स। फेजोसाइट्स हमारे पास एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करती हैं? बिल्कुल भी नहीं करती। 1 तो बिल्कुल ही रॉन्ग। 1 अगर रॉन्ग है हमारे पास, A रॉन्ग है, B रॉन्ग है, C और D में से हम बच गए। और फिर हमारे पास आ जाता है रिसेप्टर बाइंडिंग, बिल्कुल करते हैं। एंडोसाइटोसिस भी बिल्कुल करते हैं। एक्सोसाइटोसिस भी करते हैं बिल्कुल। फिजोसाइट्स का मतलब फिजोसाइटोसिस ही करते हैं ना वो लोग, तो वो मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोलिसिस भी करते हैं। तो वी हैव 2, 3, 4 and 5, which is C. C is the answer, yes. So this paper is done. And since this was my first video, so I would like you guys to suggest me in the comments below what videos should I make for O levels and A levels biology, chemistry and physics. Thank you if you like this. So please like this video and subscribe to my page. Thank you.